welcome back to my channel. My name is Kushbu Chan and Vedic Math Mastery, it's my channel name. So now in the today's video, we'll basically revision with many questions of cube root. As I told you, as I promised that in the next video, I'll definitely teach you some more questions of cube root. Then it will be clear to you the concept how basically cube root through the Vedic maths how it's work. So it's very easy. As I told in my last video, if you haven't seen my last video, I'll definitely give in my I button. You can watch out my last video of cube root. What is the basic procedure? What is the basic rules? How can we easily get the cube root answer in just 2 to 3 seconds? So now in this video, we'll basically do revision. So I made a list for you as I told you, whenever you are doing cube root, if you are doing questions of cube root, so basically there is some list. So in this list, I'll tell you that there is a 1 to 10 numbers. So these are the basically last digit of cube. Whenever I'm giving you a question, so question's last digit means ones place. So ones place और a last digit cube basically like this 1 to 10 के बीच में नंबर आपको दिया होगा and if I say the last digit of the cube root तो जब भी मैं cube root निकालूंगी तो मुझे जो आइडेंटिफाई करना होगा तो जब भी मैं देखूंगी कि क्वेश्चन का जो लास्ट डिजिट है उसका क्यूब रूट क्या होना चाहिए तो 1 का 1 होता है 2 का 8 होता है 3 का 7 होता है अब कैसे होता है ये लिस्ट जो तैयार हुई है ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था बट आई टेल यू इन दिस वीडियो एज वेल दैट विल बी क्लियर टू यू जैसे 1 का मैं क्यूब रूट करती हूँ 1 का होल क्यूब इट विल बी 1 तो इजीली मैं 1 कर सकती हूँ 2 का अगर मैं होल क्यूब करती हूँ तो इट विल गिव मी 8 ये भी वंस की प्लेस है तो ठीक है 8 एंड अगर मैं 3 का होल क्यूब करती हूँ तो इट विल गिव मी 27 सो यू कैन सी 27 में 7 लास्ट प्लेस है लास्ट डिजिट है तो 7 मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा बेसिकली क्यूब रूट हो जाएगा यानी कि अगर मेरे पास क्वेश्चन के अंदर लास्ट डिजिट 3 है तो मैं कह सकती हूँ कि इसका क्यूब रूट का जो यूनिट प्लेस होगा वो 7 होगा ठीक है ये बहुत ही मतलब अंडरस्टूड है ओके और 4 का आपको पता है कि अगर मैं क्यूब की बात करती हूँ कि 4 को अगर 3 टाइम्स मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो इट विल गिव मी 64 64 का लास्ट प्लेस होता है 4 सेम एज 125 जिसका लास्ट प्लेस होता है 5 जो मैंने यहाँ लिखा है सेम 6 का होता है 216 जिसकी लास्ट प्लेस होती है 6 वो मैंने यहाँ लिख दी है 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगी देन 3 विल बी द लास्ट प्लेस जो 3 इसका क्यूब रूट हो गया 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगी तो 5 1 2 तो 2 बेसिकली मेरा यहाँ पर लास्ट प्लेस हो गया 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगी तो इट विल गिव मी 9 लास्ट प्लेस तो मेरा यहाँ पर ये 9 हो गया तो आपको एक चीज ये ध्यान में रखनी है जस्ट कीप इट इन योर माइंड whenever you are solving questions so at least you should remember all the cube roots of 1 to 10 at least 1 to 10 के cube roots तो आपको सबको ये पता होना चाहिए जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं कि 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर you will get 343 जैसे 7 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पर you know that 49 8 को 2 टाइम्स square root everybody knows but cube root sometimes everyone confused so just try to learn at least 1 to 10 cube roots then you will be very easy to without learn cube roots क्या होंगे ठीक है ना क्यूब याद कर लोगे तो क्यूब रूट ऑटोमेटिकली हो जाएंगे सो we are solving the cube roots in two parts first of all whenever we are solving question so just try to solve the cube root in two parts first we'll shall solve the right hand part of the answer and then we'll solve the left hand part of the answer so if you wish, you can solve the left hand part before the right hand part. So there is no restriction at all. Either method, on either method. But generally people prefer to, solve the right hand part first. So I'm just giving you examples. Okay? I'm giving you examples so you will be clear. Higher digits, smaller digits, and more higher digits also. So you will definitely fulfill your all means confusions through this video you will clear it because I'll give you very many questions so you will clear it okay so just next move to next window so see this is the question
we can represent 205 slash 379. As I told in my last video, that you have to count it from the right to left. ओके, सो 3 डिजिट्स के बाद आपको स्लैश लगाना है, भले यहाँ पर कितनी भी डिजिट्स क्यों ना बचे, रेस्ट ऑफ डिजिट यू डू नीड टू कंसिडर, you just need to consider what, that whenever you are putting slash, so always try to remember that you have to put the slash going to right to left. Okay, so there is a 205 slash 309 379. So there is a two parts, there is a right hand side part and left hand side part. So how can we solve this? As you all know that this cube basically end with 9. So the cube root also end with 9. 9 का क्यूब का जो एंड होता है उसका क्यूब रूट भी 9 ही होता है, क्योंकि 9 का जो क्यूब होता है वो होता है 7 to 9। मैंने आपको पहले भी बताया था 7 to 9 का लास्ट डिजिट 9 होता है, तो 9 का जो क्यूब रूट होगा वो होगा 9। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ कि इसका जो आपका एक पार्ट का आंसर निकला है वो 9 निकल गया है। ठीक है, so right hand side already we have completed, okay, within just 1 second. So now move to next part, which is left hand part. Okay, so 205. So how we'll consider the left hand side part, basically 205. So we'll consider 205, it lies between the perfect cubes between 125 and 216, means आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, और जितने भी स्क्वायर रूट की वीडियो है मेरी, आप उसको चेकआउट करना। स्क्वायर रूट सेम प्रोसीजर स्क्वायर रूट का अप्लाई होगा, कि इससे आपको यहाँ पर एक नंबर छोटा और एक नंबर बड़ा स्क्वायर रूट देखना है, क्यूब रूट देखना है। ठीक है, सो यहाँ पर आएगा आपका फर्स्ट नंबर आ जाएगा 125, और नेक्स्ट आपका क्यूब रूट आ जाएगा 216। तो बेसिकली 125 का जो क्यूब रूट होता है वो होता है 5। ये 5 का क्यूब होता है बेसिकली 125, और 216 का होता है 6। ठीक है ना, सो आई थिंक ये क्लियर है आपको बिल्कुल। तो 125 का 5 हो गया, 216 का 6 हो गया। ओके, so now what we have to do is we have to take a small digit. See, 205 का 125 और 216 स्मॉलर एंड बिगर ले लिया है, और इसमें से इन दोनों में से हमें हमेशा क्या लेना है, स्मॉलर डिजिट लेनी है। तो आई थिंक as you can see here 5 is a smaller digit, so we'll take 5 digits here, 5 here, and 59 is the cube root, basically cube root of which, cube root of this question. So this answer has been completed. See, this is so easy. नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अभी आपको कराऊंगी, इट विल बी मोर क्लियर। आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, सिंपल दो पार्ट्स में डिवाइड करें। इसका आपने यहाँ पर क्यूब रूट देखा, और इसको आपने स्मॉलर और बिगर में जो स्मॉलर डिजिट होती है हमेशा वही आपको लेनी है, और जब स्मॉलर डिजिट लोगे तो ये आपका आंसर बन जाएगा क्यूब रूट। 59 को अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो यू विल गेट 205,379। दिस इज द आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट विंडो एंड आई विल डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस विद यू। बात तो सही है। So now this is the question. So what we have to do is, see, this is the 681,472. So what we have to do, basically we'll divide into two parts first. I'll write in the middle 681,472. So what we have to do is, I'll put a slash in between, and after the 3 digits, always just remember it right to left. Okay. After the 3 digits, I'll put a slash, and rest of the digits I'll not consider it. ये 3 digits remaining है या 4 digits remaining है. So 681,472. Now you have to decide, क्यूब आपका यहाँ पर 2 है लास्ट डिजिट, तो लास्ट डिजिट 2 का क्यूब रूट क्या होता है? 2 का क्यूब रूट क्या होता है आपको पता होगा, अब तो याद होगा। ठीक है, मैं बता देती हूँ, 2 का क्यूब रूट होता है 8। ठीक है, तो 2 का क्यूब रूट होता है 8। तो यहाँ पर मेरा राइट हैंड साइड पार्ट कंप्लीट हो गया है। नाउ 681, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर 681 का जो स्मॉलर और जो बिगर पार्ट है वो मुझे लेना है, यानी कि स्मॉलर क्यूब रूट और बिगर बिगर क्यूब रूट। तो आप देख सकते हो कि 512 एक होता है, और इससे बिगर में जाएगा मेरे पास 729। तो 512 बेसिकली किसका क्यूब रूट होता है, अगर आपको पता हो तो 512 बेसिकली होता है 8 का क्यूब रूट।
ठीक है, यानी कि 8 का क्यूब करूंगी तो 512 आता है, और 729 बेसिकली मेरा होता है क्यूब बेसिकली ऑफ 9। 9 का क्यूब करने के बाद मुझे 729 मिलता है। तो आई ऑलवेज टेक आउट द स्मॉलर डिजिट, सो 8 इज द स्मॉलर, so I'll take out smaller digit, so I'll write it 8. So now left hand part is also completed and answer is 88. If I multiply 88 into 88 into 88 means 3 times of 88. So I'll get the answer of what? The cube root of 681472. Now this answer has completed. I hope this question also it has been clear to you. There is no confusion. If any confusion, if you think that there is any confusion, so you can write in the comment section. I'll definitely clear your doubts in my upcoming videos. And if you think that this really knowledgeable video for you and my way of teaching it's really appreciable and clear to you the concept, so you can like and subscribe my channel, so you will get definitely more and more very knowledgeable and very interesting videos in upcoming future, because I'll definitely upload some memory sharpen memories videos as well, that how can you sharp your memory, how can you learn at the time, at the same time how can you learn easily, a big paragraph or 10, 10, 20 times, 20 words at the same time. So it will give you a more help. Okay. So now move to next question. So it will clear. So now this is the question. This is the next question is 830 and 584. See how easily we can get the answer. See, I'll just put a slash in between. There is some. See, I'll write it again. So I will put a slash in between. So left hand side is separated and left hand right hand side is also separated. Now what we have to do is on the right hand side part, the last digit is 4, and I think you know that the 4 last digit of cube. So there is a cube root of the 4 is 4. Okay. So the basically answer is 4. Okay, so so your answer of the right hand side part is completed. So the 4. Okay, what about the 830? So I'll take two cubes of 830, smaller and bigger. So 830 basically lies between the 7 to 9 and 1000. So as we all know that if I say 10 cube, basically 1000. If I say 9 cube, it's basically 7 to 9. Hope you cleared it. So the now there is a small digit is 9, not 10. So small digit is 9. I'll pick basically 9. So 9 I will write it here. So 94 basically is the answer, the final answer. Because since the smaller number is 9, I take out 9 as a smaller digit from the left hand side part. So 9 and 4, 94 basically is the answer of the cube root of 830584. So if you multiply 3 times of 94 into 94 into 94, you will get 830584. This is the answer. So easy you can get the answer. Now I'll take a small 4-digit question. 4-digit question. Okay, I'll take 4-digit question. So you will more clear. See how can easily we can apply same method on the other digits also. Okay, and I'll give you a one more video on the cube root in which I will I will give you a small digits and a very higher digits also, by which the same method you apply and you will get the answer in just 2 to 3 seconds. So I'll give a one more video of revision video, so you will get more clear. Okay. So now move to 4-digit question. So you will see the magic of Vedic maths. Okay. So friends, this is the question 2197. This is the 4-digit question. Find the cube root of 2197. So how can we find it? See, 2197, what we have to do is
we have to put a slash. As I told you, you have to put a slash. So the number basically 2197 will be represented as what? As I told you, put a slash. As I told you, right to left, you have to put a slash after the three digits. So I basically put the slash. Now what we have to do is basically last digit is 7. Okay, last digit is 7, and as you all know that the 7 is basically the cube root of 7, the 7 cube root इसका होगा आपका 3. ठीक है, क्योंकि 7 का जो अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर इज 343, एंड 343 में जो 3 है वो लास्ट डिजिट होगा आपका. तो इसके हिसाब से मेरा जो यहाँ पर आंसर आ गया राइट हैंड साइड पार्ट का वो 3 आ गया. ठीक है. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू do we have only one remaining part, basically 2. So the now I think in your mind there is a confusion what will take the smaller and the bigger. See, smaller and bigger. अब मुझे क्यूब लेना है बेसिकली इसका स्मॉलर एंड बिगर जो हम लेते आए हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्क्वायर रूट मेथड के अकॉर्डिंग. तो देखो इसका यहाँ पर आएगा 1. ठीक है, तो 1 का क्यूब बेसिकली होता है 1. 1 का क्यूब 1 होता है, और यहाँ पर मैं लूंगी 2. ठीक है, तो 2 का बेसिक सॉरी 8 आएगा यहाँ पे. तो 2 का क्यूब आपको पता है 8 होता है. ठीक है, 2 का क्यूब आपको पता है 8 होता है. तो 1 और 8 मेरे पास स्मॉलर एंड बिगर दोनों आ गए. तो यहाँ पर मेरे को क्या लेना होता है हमेशा स्मॉलर डिजिट. तो 1 विल बी द स्मॉलर. तो मैं यहाँ पर क्या लूंगी 1. So this is the answer. If you multiply 13 into 13 into 13, यानी कि 3 times of 13, so you will get what? You will get the 2197. So this is the answer. See how easy it is. And I think, I hope that the way I'm teaching and this technique which I basically am teaching you, it's really easy. नॉट लाइक तुक्का नहीं है यहाँ पर कोई भी कि यहाँ से लिया और वहां से लिया और कोई तुक्का मारा और चलो एक वीडियो बना दी और आपको सिखा दे क्यूब रूट क्या होता है. नो, देयर इज अ प्रॉपर मेथड ऑफ क्यूब रूट एंड द लास्ट स्क्वायर रूट. सो आई थिंक यू शुड प्रमोट दिस वीडियो. प्लीज इसको आप लाइक सब्सक्राइब करें. कोई भी प्रॉब्लम है जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन. और कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व any cube root question, so I will definitely give you solution. Okay, just write in the comment section. I'll definitely. So we'll basically, we may thus conclude that the three exist only one common procedure. See, we have seen smaller digits, higher digits, and four digits number also. So we have seen there is a common procedure for solving all types of perfect cube roots. So basically, you know what, in my, you can say seminar or in my workshop, when I basically uh, took a 1 day uh, seminar, so there is a participant, there were the students, they often basically ask, what is the procedure of solving the cube roots of number having more than 6 digits? Because as I told in my video, that 6 digit numbers, 4 digit number, and lower digit number also in my last video. But all the examples that we have solved before the had 6 or fewer digits, lower digits, fewer digits. But well, the answer in this question, the procedure for solving the problem is the same. The only difference in the case is that will be expanding the number line. So how can we expand the number lines is basically I'll teach you in my next video. So just keep watching and like and subscribe my channel so you will get more and more videos, and I'll definitely teach you the traditional method where there are so many intermediate steps that you have to solve basically. So I'll definitely take out some more videos for cube root versus the traditional method cube root. So you will definitely see the difference and magic of the Vedic maths, that how easily we can get the answer in 2 to 3 seconds, in just a seconds. Okay, so just keep watching and bye bye and stay healthy.